अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी गोलगप्पे। गोलगप्पे बहुत हार्ड चीज़ें बनाने के लिए और उनको बहुत टाइम लगता है बनाने के लिए, तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप ये वीडियो को देखते जाए। Hey guys, what's up and welcome back to the video. Today I'm going to be telling you the recipe for Gol Gappay. As you may know, Gol Gappay are very hard to make and have a very long recipe, so sit back, relax, and keep on watching because this is going to be super easy. Today we're going to be using Dashi's Gol Gappay pack for traditional style, और मैं ये वाला पैक यूज़ करूँगी बना के, और ये बहुत आसान है। आपको सिर्फ इनको फ्राई करना है और फिर आपके गोलगप्पे के शेल्स तैयार हो जाएंगे। तो over here I have my oil preheating, so I'm gonna open this up. What's अपना oil preheating इधर already है, तो हम अब इसमें सिर्फ गोलगप्पे डालेंगे। So over here I have my oil preheating already, and all we have to do is put the golgappa into this. So as you can see, they're like this, and all you have to do is आपको सिर्फ इसके अंदर डालना है, and you just have to put it in. ये गोलगप्पे 60 इस पैकेट में है, 190 रुपीज़ के लिए सिर्फ, तो आपकी पूरी फैमिली इसको एंजॉय कर सकती है। और ये जैसे पूरी आपके बहुत मज़ेदार भी अंडे बनते हैं। See, these are very easy to make, and you get 60 Golgappas for 190 rupees in the whole packet, and you know, they're really good, yummy in the end as well. Some of the Golgappas, so I have one plate of them, but there are 60 in total, like I said, and that's a really good amount. And you might be thinking that that's the only thing that comes in this packet, but guess what? Along with Golgappas, you also get chaat masala, so that's really good. And so I'm just gonna set this aside. I've taken some out over here. Fry हो गया गोलगप्पे और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, और अब हम इनकी फिलिंग करेंगे। तो पहले filling से पहले, before the filling, we have to make a hole in the golgappa so that we can put it inside. So I'm gonna take this spoon, just make like one. Oops. As you can see, these are very crunchy. ये बहुत crunchy है, और जैसे जब मैं इनको तोड़ रही थी तो बहुत अच्छी आवाज़ भी आ रही थी क्रंच का। और अब मैं बाकी के साथ करूँगी और इनको फिलिंग करेंगी। गोलगप्पे के साथ मेरे पास अपनी फिलिंग्स है, उसमें मेरे पास इमली का पानी, पापड़ी, धनिया, बॉइल्ड आलू, पोटैटो, रायता, योगर्ट, दही, chaat masala, or chickpeas. Along with the golgappas, I have tamarind water paste, papri, coriander, boiled potatoes, raita, yogurt, chaat masala, and raita है दही के साथ धनिया, पुदीना, और green chilies. This raita is really simple to make. It's just yogurt with coriander, green chilies, and mint. गोलगप्पे बनाकर इस प्लेट में रखूँगी, और पहले हम अपने गोलगप्पा लेंगे. So first we're gonna take one golgappa and we're gonna put chana in it. So first we're gonna put पहले हम चना डालेंगे, और फिर आलू, और and पापड़ी, and or मैं इसको भी साइड में रखूँगी. I'm just gonna keep it aside.
And now I'm gonna add in the yogurt, raita. Some people put only yogurt or only raita, but I'm putting both. The imli ka pani, the tamarind paste, the chaat masala, and some coriander, some dhania. Now, let's taste it. Now we're gonna make another Golgappa. So I'm gonna take one of these and I'm gonna put some chickpeas into it. There we go. Sweet potato, the boiled potato. Yeah, okay. I'm gonna take some this papri. I'm gonna set this aside and put some yogurt into this. Some people only put yogurt into it, and some people only put raita into it, but I'm putting in both. And the raita. Now the tamarind piece, the chaat masala. This just gives it a little bit of spiciness into it. And some coriander. Ta-da! Now, let's taste it. So there you have it, your Golgappas are ready and they look amazing. You guys should really try this recipe, and if you do, tell me in the comments down below and give this video a big thumbs up. Please like, subscribe and share my videos. Bye! देखिए हमारे गोलगप्पे तैयार हो गए और ये बहुत यमी लग रहे हैं और क्रंची भी होंगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी जब मैं होल भी काट कर रही थी तो बहुत अच्छा क्रंच की आवाज़ आई थी. तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को बिग थम्स अप दें. आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. बाय!